Hello dear students and welcome to EduTap guys. Guys, we are back again with another session of RBI SEBI NABARD 2020, and the topic that we are going to cover today is reading comprehension, which is one of the most important topics for this exam because it's quite scoring, and there are a lot of questions based on reading comprehension. And the easiest part is every answer is given in the question paper and you just have to find your answers. That's the easiest part. So guys, let's begin with the session. And guys, if I'm audible, if I'm visible, just type yes in the chat box please. Good evening Aarti. Hello Akansha. नहीं, error detection Tuesday को है, next Tuesday को है Akansha. Hello the offbeat tourist, welcome to the session. Okay guys, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साउंड में या वीडियो में? I hope there is none. All right, thank you so much guys. Guys, before we begin, I would like to inform you about the master course of EduTap for all banking exams for the year 2020 and 2021. So guys, we have recently launched a new master course wherein we'll be providing you quants, reasoning and English. And it used to be 9,000 rupees, but due to coronavirus, we brought it down to 7,000. And even on 7,000, you can avail a 30% discount by using the coupon code repeat30. So you can basically avail it for 4,900 rupees only. So quants, reasoning, English for 14. And if you're only looking for English course, then there is another course which is on the right of the screen. And guys, it used to be 5,000 rupees, but we've brought it down to 3,000. And on this 3,000, you can again avail 30% discount. So it would cost you only 2,100 rupees. And coupon code for that 30% discount is my name, Narveer30. Good evening, everyone. Hello, Hari Krish. Hello, S. Kirthana. Okay. Good evening, Swati. Chalo, guys. So let's begin with the session. So, guys, the topic today is reading comprehension. So, guys, my first question to you is, guys, why do they ask you a reading comprehension question on the exam? What are they looking for? I'm good, Akash. How are you? कैसे हो सब यार? I hope everybody is safe, everybody is fine. Guys, why do they ask you reading comprehension questions in the exam? What are they trying to test? Your reading ability, your comprehension power, your understanding ability? What is it? Can anybody share his or her opinion with me? So basically, reading comprehension is to check ability to comprehend, reading and comprehension skill. Very good. So basically, what they do is they give you a passage, right, which could be based on any number of topics. Could be based on any social issue, could be based on economic platform, could be related to any finance, could be related to anything that we see across across day-to-day life. So basically you have to have a good reading habit. But guys, reading and comprehension skill here, my question to you is, देखो यार, आप सब ग्रेजुएट्स हो और डिसेंट कॉलेज से ग्रेजुएट्स हो, तो गाइस रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल में क्या फ़र्क होगा? जब सबने ग्रेजुएशन कर रखी है, सब अच्छे से तैयारी करके आ रहे हैं, तो आई थिंक सबकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पावर तो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए. आई कैन कॉल इट 1921, 1921 का फ़र्क, राइट? एन आर्म्स लेंथ, तो थोड़ा सा मतलब फ़र्क होगा, लेकिन उसमें चेक क्या होता है? देखो गाइज, अगर उसने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन या एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड चेक करना होता आकांक्षा, तो वो प्रेसी बनाने को नहीं दे देता कि एक पैसेज दिया हुआ है, इसकी प्रेसी बना दो. उससे उसको पता लग जाता कि बच्चों ने कितना समझ आया है, कितना समझ नहीं आया है. लेकिन साउंड इश्यू लग रहा है. अंडरस्टैंडिंग तो यार, अंडरस्टैंडिंग तो आई थिंक सबकी ऑलमोस्ट सेम सी जैसी ही होती है आई थिंक,
right? So what's the underlying difference, guys? वो क्या चेक करना चाहता है कि आप कितना पढ़ के कितना अच्छे से समझ सकते हो? रॉन्ग गाइस, ना प्लीज पे अटेंशन जो आपको आज बताने वाला हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स या रीडिंग एबिलिटी चेक करने के लिए नहीं होता, ठीक है? इट्स मोर अबाउट स्मार्ट वर्क, ठीक है? बच्चा कितना स्मार्टली काम करता है। देखो बेसिकली एक जनरल आइडिया क्या है, इतना बड़ा पैसेज पढ़ के, पैसेज फॉर अबाउट 600 to 900 वर्ड्स, ठीक है? और हम फिर क्या करते हैं, हम उसमें से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन्स और फैक्चुअल डेटा प्रोवाइडेड इन द पैसेज, राइट? बीच बीच में ओके, आई गेट इट फिक्स्ड आकाश, ठीक है? ट्राई टू वर्क ऑन इट। ये कुछ नया माइक यूज करना शुरू किया था हेडफोन में, तो आई थिंक शायद उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। टू डेवलप द नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। टू डेवलप तो आपने करना है, वो क्या चेक करना चाहता है? वो बेसिकली क्या करता है, एक पैसेज देता है आपको, ठीक है, विच इज अबाउट ये लॉन्ग, मे बी अबाउट अ पेज लॉन्ग और समथिंग, और फिर इस पे बेस्ड वो आपको 5 या 10 क्वेश्चंस देता है बेस्ड ऑन द पैसेज, और हर क्वेश्चन के ना आपको मल्टीपल चॉइस आंसर्स दिए होते हैं। तो देर आर 5 ऑप्शंस गिवन टू यू, ठीक है, A B C D E, and you have to choose which is the most apt answer or which is the correct answer here, ठीक है? तो गाइज अब बेसिकली बच्चा सोचता है कि इसमें सर हमें क्या करना है, अच्छे से समझ के ना और आंसर ढूंढने हैं, सिर्फ यही इसमें रोल नहीं है गाइज, ठीक है? अब इसको कैसे क्रैक किया जाता है आपको आज वो डिस्कस करते हैं। देयर इज अ वेरी स्मार्ट ट्रिक जो आपको शायद बचपन से बताई भी गई होगी, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स रीडिंग, ठीक है? तो रिवर्स रीडिंग इज बेसिकली समथिंग विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। बेसिकली रिवर्स रीडिंग क्या है मैं समझाता हूँ गाइस। देखना बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन को करना शुरू करते हैं, ठीक है, वो सीधा जंप कर जाते हैं पैसेज पे, ठीक है? वो पैसेज को पूरा पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। यही करते हैं हम सब, पूरे ध्यान से पढ़ते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ गाइस द प्रॉब्लम इज इफ यू स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द कॉम्प्रिहेंशन, यू डोंट नो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है? तो दैट्स नॉट अ स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या है गाइस? रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग का मतलब क्या है गाइस? रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। अपने पेपर में पैसेज के पहले क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है? उससे क्या होगा, उसके दो बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं गाइस। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ढूंढना क्या है पैसेज में, मतलब उनके कीवर्ड्स, ठीक है? जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा। और दूसरा, यू विल गेट a general idea of the passage, okay? So that will prepare you before you read the passage। देखना गाइस, मैं एग्जांपल देता हूँ। ये इसका फायदा क्या होता है समझाता हूँ आकांक्षा। सिर्फ ये नहीं कि पहले क्वेश्चन पढ़ना अच्छा होता है, सिर्फ ये ऐसे कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ठीक है? इट्स अबाउट लॉजिकल अप्रोच। देखना, मान लो मैंने पैसेज पढ़ा, अब क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं पूरे ध्यान से, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, फिर उसके ऑप्शन देखे, फिर हम कंफर्म करने के लिए दोबारा पैसेज में जाके ढूंढते हैं उसको, राइट? फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, फिर ऑप्शन देखे, फिर हमने जाके उसको कंफर्म करने के लिए फिर पैसेज पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, सेम 4 5। तो बेसिकली अगर आप 5 क्वेश्चन इस तरह से कर रहे हो तो आप पैसेज कितनी बार पढ़ रहे हो? यू आर जॉगिंग थ्रू द पैसेज 5 टाइम्स, और एक बार आपने पूरा पैसेज पढ़ दिया। दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले हमेशा क्या करो गाइस, पहले हमेशा क्वेश्चंस पढ़ो। और क्वेश्चन पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ना है उनको, पढ़ने का मतलब उनको पढ़ के और उनमें से कीवर्ड्स पिक आउट करो कि ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, और वो कीवर्ड से फिर आपको अपना आंसर मिलने ढूंढने में बहुत आसानी मिलेगी। तो आई गिव एन एग्जांपल गाइस। देखो मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, सुनना ध्यान से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, विच ओके व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वर द मेन reasons for terrorism in America? Question number 2, what according to the author were the consequences of the attacks of 9/11 on America and the world? Question number 3, according to the passage, what is the difference between bioterrorism and chemical terrorism? Question number 4, as per the author, the root cause of terrorism between eastern countries and western countries lies within, फिर उसने ऑप्शन दिया। क्वेश्चन नंबर 5, फिर वो क्या करता है, जैसे उसने बोला
what was the decision taken by the by UN by the UNO in the peace summit of Switzerland, राइट? बेसिकली मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं गाइस, और पैसेज का अभी तक आपने एक भी वर्ड नहीं पढ़ा। नाउ क्या आप मुझे 2 चीजें बता सकते हो? पहले तो मुझे जनरल आइडिया कि पैसेज जो होगा वो किस बारे में होगा, व्हाट वुड बी द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। यस गाइस, कैन यू टेल मी द आंसर? ये 5 क्वेश्चन से आपने क्या समझा है कि पैसेज में क्या कुछ हुआ होगा? गाइस नाउ दिस इज क्रिटिकल एनालिसिस। मैंने देखा कुछ 9/11 की बात हुई है, कुछ बायो टेररिज्म और केमिकल टेररिज्म की बात हुई है, राइट? फिर टेररिज्म इन अमेरिका की स्पेसिफिकली बात हुई है, राइट? फिर उसके बाद पीस समिट की कोई बात हुई थी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अटैक्स ऑफ 9/11 की बात हुई थी। तो एक जनरल आइडिया हमें क्या मिलता है? द पैसेज इज अबाउट टेररिज्म। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड अभिषेक। सो दिस इज द जनरल आइडिया। अब कीवर्ड्स क्या थे गाइस, अब वो समझना दो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाज द मेन रीजन ऑफ टेररिज्म इन अमेरिका। तो मेरे कीवर्ड क्या है इसमें? रीजन ऑफ टेररिज्म अमेरिका। तो मुझे अगर ये कीवर्ड ध्यान रह गया तो जब मैं पैसेज पढ़ूंगा तो जैसे ही इनसे रिलेटेड या ऐसे जैसे कोई कोई भी वर्ड आएगा पैसेज में, ठीक है, तो मुझे यहीं पे क्लिक कर जाएगा कि ये मेरे पैसेज में आंसर है, ये मेरे क्वेश्चन का एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर was the main cause of conflict between eastern countries and western countries। तो मुझे कीवर्ड क्या है गाइस? cause of conflict eastern and western countries। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोटेररिज्म एंड केमिकल टेररिज्म। जहां पे भी बायोटेररिज्म केमिकल टेररिज्म की बात आएगी मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो इन्हें बोलते हैं गाइस कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स अगर आप याद रख के चलोगे ना, देखो गाइस इट्स सिंपली लॉजिकल। आप एक रीडिंग में पूरा पैसेज 900 वर्ड का याद नहीं कर सकते, लेकिन आप एक रीडिंग में आप 5 क्वेश्चन में से 5-7 वर्ड जरूर याद कर सकते हो, राइट? यू कैन कीप दोज इन माइंड एंड देन यू सर्व थ्रू द पैसेज। उससे आपको ना एक स्किमिंग एक चीज समझ आएगी कि जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते चले आप समझ रहे हो, जहां तक आपको आपके कोई भी कीवर्ड नहीं मिल रहे तो यू कैन मेक आउट कि यार यहाँ तक मेरा कोई अभी तक आंसर नहीं आया है, तो आई कैन स्किम। और जैसे ही आपको कोई भी कीवर्ड ऐसा दिखे कि यार ये मेरे क्वेश्चन जैसा है, वहीं पे स्लो हो जाओ और स्लो होके फिर अपना आंसर ढूंढो और वहीं पे अपना आंसर मार्क करके और आगे निकलना है फिर हमने। तो मतलब बेसिकली हमारा हमारा एम क्या होना चाहिए गाइस? ठीक है, ये आप ध्यान से सुनना जो आप बोलने वाला हूँ। हमारा एम क्या होना चाहिए? ओनली वन रीडिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सिर्फ हम एक रीडिंग देंगे और एक रीडिंग में ही, ठीक है, अगर मैं 5 में से 4 या 5 क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट कर पाता हूँ, देयर वुड बी नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन अगर आप बार बार इसको पढ़ के इस पे इतना टाइम वेस्ट कर दोगे ना, तो दैट वुड बी इलॉजिकल। ठीक है, यहाँ से आप टाइम सेव करोगे गाइस, और ये जो टाइम सेव करोगे वो आप इसको अलॉट करोगे रीडिंग रीअरेंजमेंट को और क्लोज टेस्ट को, राइट? तो आज गाइस देखना, रिवर्स रीडिंग आपको प्रॉपरली करके दिखाता हूँ आप पैसेज में कैसे करना है आपको एक्चुअल एग्जाम में। तो गाइस आर यू रेडी? शुरू करें? तो लेट्स बिगिन। तो आज कुछ हम डिस्कस करेंगे पैसेजेस एंड लेट्स सी रिवर्स रीडिंग का बेनिफिट होता है या नहीं होता है, ठीक है? सो आज मैं आपको पैसेज देने से पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक है? लेट्स फिगर आउट द कीवर्ड्स एंड देन लेट्स रीड द पैसेज एंड देन ट्राई आउट द आंसर्स, ओके? चलो लेट्स बिगिन गाइस। So the first question is, inflation is normally decrease in supply of goods, increase in access to wealth, multiplication of resources, rise in price of goods and services over a period of time. So basically we have to find the definition of inflation. Inflation is normally what? Second passage, second question, according to the passage, inflation initially referred to, initially means शुरुआत में। तो उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? इनिशियली इन्फ्लेशन को हम क्या कहते थे, कैसे रेफर किया जाता था? तो पहले आपने ढूंढना है इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। सेकंड क्या है? इन्फ्लेशन को इनिशियली शुरुआत में क्या कहा जाता था? थर्ड, रियल वैल्यू ऑफ मनी कैन बी इन्फर्ड एज। सो वी हैव टू फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ मनी, कैसे समझा जा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, इन द पैसेज इकोनॉमिस्ट्स कंकर दैट हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर ड्यू टू। सो इकोनॉमिस्ट्स कंकर दैट दे एग्री दैट हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर ड्यू टू। तो वी हैव टू फाइंड द रीजन for high rates of inflation according to economists. And is there any other question? Yes. Moderate rates of inflation are caused by which of the following? So moderate rates of inflation. So we have to find cause of moderate rates of inflation. We have to find the cause of high rates of inflation according to economists, real value of money, in definition of inflation, and initial
रेफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन, करेक्ट। चलो गाइस, सो पहले आंसर दे दिया। चलो पढ़ते हैं एक बार एंड लेट्स सी कि हम कितना उसमें से एक रीडिंग में अब ढूंढ पाते हैं। समझ आ गया सबने, कीवर्ड देख लिया। चलो गाइस, सो दिस इज द पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स रीड इट एंड लेट्स फिगर आउट कि हम एक रीडिंग में कितने आंसर ढूंढ पाएंगे और हमें एक रीडिंग में रिवर्स रीडिंग का कितना बेनिफिट होता है। चलो गाइस, लेट्स रीड इट टुगेदर। इन्फ्लेशन यूजुअली रेफर्स टू जनरल राइज, ये देखो पहले एक सेंटेंस में आंसर आ गया। इन्फ्लेशन का हमें डेफिनेशन ढूंढनी थी ना। नॉर्मली इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं। दिस ऑल्सो दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, द टर्म इन्फ्लेशन ओरिजिनली रेफर्ड टू द डिबेसमेंट ऑफ करेंसी and was used to describe increases in the money supply, that is money inflation. So right now inflation is considered price inflation, but initially it was considered money inflation. So I think मेरे दो क्वेश्चन के आंसर मुझे यही मिल जाते हैं, right? So let's go to question number 1. Let's see. Decrease in the supply, increase in the access to wealth, multiplication of resources with the passage of time, rise in the prices of goods and services over a period of time. मुझे एक रीडिंग में मुझे एक पहला क्वेश्चन मिल गया। And initially इसका मतलब क्या था? इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, डिबेसमेंट ऑफ करेंसी, कॉज एंड इफेक्ट सिनेरियो या प्राइस इन्फ्लेशन। सेकंड का आंसर क्या है गाइस? वेरी गुड, डिबेसमेंट ऑफ करेंसी, बिकॉज इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सो फैक्चुअल क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाते हैं गाइस पैसेज में। फर्स्ट इज डी, सेकंड इज बी, राइट? इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, क्या बोल रहे हो कांक्षा? Was used to describe increases in money supply, but it referred to debasement of the currency. Kancha, second ka B hai answer. It used to describe increase in the money supply, that's money inflation, but it was referred to as debasement of currency. So there's a difference. Describing money supply, increase in money supply was initially called inflation. It's called described, but it actually referred to debasement of the currency. Correct? चलो आगे पढ़ते हैं. However, debates regarding cause and effect have led to its primary use today in describing price inflation. So basically, inflation usually refers to general rise in level of prices of goods and services over a period of time. This is also referred to as price inflation. The term inflation originally referred to debasement of the currency and was used to describe increases in the money supply. However, debates regarding cause and effect have led to its primary use today in describing प्राइस इन्फ्लेशन। सो जो इसका प्राइमरी यूज था वो अब सही माना जाता है। Now inflation can also be described as a decline in the real value of money. It can also be described as decline in the real value of money. This means logically that, very broadly speaking, all economic values have to be updated at the rate of inflation. When the general level of prices rises, each monetary unit buys fewer goods and services. Basically, logically क्या मतलब होता है यार इन्फ्लेशन का? All economic values have to be updated at the rate of inflation. When the general level of prices rise, each monetary unit buys fewer goods and services. For example, यार 100 रुपए की वैल्यू 10 साल पहले क्या थी और अब क्या है, वो साथ साथ अपडेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले 100 रुपए में कितनी चीजें आ जाती थी और अब 100 रुपए में कितनी चीजें आ पाती हैं। देयर इज अ डिफरेंस. Basically, each monetary unit buys fewer goods and services. That's inflation. So economists generally agree. इस पे भी क्वेश्चन था ना, economics concur था ना. Economists generally agree that high rates of inflation and hyperinflation are caused by high growth rates of the money supply. Right? ये मेरा एक आंसर है, I think. High growth rates of the money supply. कि money supply के high growth rates को are the causes of high rates of inflation या hyperinflation. Views on the factors that determine moderate rates of inflation are more varied. लेकिन जो hyperinflation है वो उसके reasons क्या हैं? High growth rates of money supply. लेकिन जो moderate rates of inflation है, ठीक है, उसके जो factors हैं वो बहुत varied है, अलग अलग हैं. वो कौन से हैं? Changes in inflation are sometimes attributed to fluctuations in real demand for goods and services or in available supplies.
One, that is changes in scarcity. Sometimes to changes in the money in supply. It can be varied and it can also be attributed to changes in the money supply. That means amount of units of currency. However, there is a general consensus that in the long run, inflation is caused by money supply increasing faster than the growth rate of the economy. That's considered in general. So guys, let's find out the answers for question number 3. Real value of money can be inferred as the purchasing power, ability to purchase fewer goods, updating of real values, a decline in the value. Real value of money. किया था हमने? अरे, where is the real value of money? Inflation can also be decline in the real value of money. So the real value of money, yes guys, क्या आना चाहिए? The purchasing power, ability to purchase fewer goods, updating of real values, a decline in the value. थर्ड का डी लग रहा है सभी को, आरती को बी लग रहा है. रियल वैल्यू ऑफ मनी कैन बी इन्फर्ड एज एबिलिटी टू परचेज फ्यूअर गुड्स. ये रियल वैल्यू ऑफ मनी है गाइस, आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब यही होता है. रियल वैल्यू ऑफ मनी की कहीं पे भी पैसेज में डेफिनेशन नहीं दी हुई थी. देखना गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ. अब रियल वैल्यू ऑफ मनी बात जरूर की है, लेकिन क्या बोला? इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज डिक्लाइन इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है. So inflation can be described as decline in the real value of money, but there is no definition of real value of money anywhere given in the passage. Got it? So it is none of the above. ध्यान से पढ़ो guys. And question number 4, in the passage, economics concur that high rates of inflation are due to high growth potential of the money supply, high growth rates of the money supply, high growth rates of the money spending, या high growth rate of money distribution. Supply देखते हैं guys, ये था ना, caused by high growth rates of, ये आंसर इसका, high growth rates of the money supply. So high growth rates of the money supply. कौन सा आंसर है guys? फोर्थ का आंसर आई थिंक high growth rates of the money supply. That means the correct option is option number B. Very well done guys. Last question. Moderate rates of inflation are caused by which of the following? Discrepancies in perceived demand for goods and services and changes in the money supply, fluctuations in real demand for goods and services and changes in money supply, changes in scarcity and changes in money demands, high growth rates of money supply, या none of the above. एक बार देख लेते हैं guys. ये था ना सेकंड लाइन में, views on the factors that determine moderate rates of inflation are more varied. Changes in inflation are sometimes attributed to fluctuations in real demand for goods and services in available supplies, and sometimes to changes in the money supply. So fluctuations in real demand for goods and services and changes in money supply. Yes guys, क्या आना चाहिए guys? फिफ्थ का आंसर ए आना चाहिए या बी आना चाहिए? आकाश देखो जरा. Very good. So the correct answer is not discrepancies in perceived, it is fluctuations in real demand for goods and services and changes in money supply. तो गाइस आप सिंपल से लॉजिकल देखो, आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा समझने में. जितने एफर्ट्स आप गाइस नॉर्मली आप लगाते थे इतने बड़े पैसेज को पढ़ के, ठीक है, पैसेज पढ़ के और हर चीज़ को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए तो आप एक रीडिंग में ही ऑलमोस्ट आउट ऑफ 5 4 और 5 आंसर्स आप बड़े आराम से ढूंढ पाए. So this is guys a smart approach to crack reading comprehension in the exam. ठीक है. So guys, जिसकी हैबिट नहीं है आज अभी तक, क्वेश्चंस को पहले पढ़ना और अपने कीवर्ड्स को मार्क करना, तो गाइस आज से स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन. ठीक है. चलो एक और पैसेज करके देखते हैं. नो गाइस, पैसेज से पहले मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ठीक है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द कीवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 1, द एम्प्लॉइज इन आवर कंट्री are quite punctual but not duty conscious, are not punctual but somehow manage to complete their work, are somehow lazy but good natured, are not very highly qualified. Okay,
The leadership in administration sets a fine example, is of reasonably high standard. Okay. The work assessment means inquiry, report, evaluation, summary. According to the writer, the administration in India is by and large effective, very strict in form, affected by red tape, या more or less ineffective. Okay. कुछ एम्प्लॉयज़ की लीडरशिप की, वर्क असेसमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है यहाँ तक। और लास्ट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज कुड बी बेस्ट एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग। चलो हमें मेन आइडिया ढूंढना है। तो एम्प्लॉयज़ के बारे में हमें ढूंढना है कि एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या कहता है वो हमारे देश में। लीडरशिप, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लीडरशिप है उसके बारे में हमें ढूंढना है। सो एम्प्लॉयज़ के बारे में ढूंढना है, लीडरशिप के बारे में ढूंढना है, वर्क असेसमेंट हमें पता ढूंढना है क्या होती है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ऑथर उसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, एंड फिर हमें प्रैक्टिस करो आकाश, बिकॉज जितनी आपकी रीडिंग हैबिट होगी ना, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब चमत्कार नहीं होने वाला वहाँ पे कि पैसेज ईजी नहीं होने वाला किसी के लिए भी। अगर वो इतना आसान दे देते तो फिर तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं थी ना, सभी को जॉब मिल गई होती है आकाश, राइट। बट पॉइंट इज, जितना आप रीडिंग हैबिट और इनको सॉल्व करने की हैबिट में आ जाओगे ना, रोज प्रैक्टिस करते रहो, एक एक पैसेज निकालो। ऑनलाइन पता नहीं कितने पढ़े हैं यार, देयर काउंटलेस पैसेजेस। तो एक रोज का कर दो, ठीक है। कोई ऐसे भी नहीं है कि आपको रोज के 10 करने हैं, पेपर से पहले 10 दिन पहले आपको 1000 करने हैं। रोज का एक एक करते चलो, यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन विद इन वीक्स। मैं गारंटी देता हूँ गाइस, आफ्टर 21 days when you get into the habit of solving one passage every day, I'm damn sure you'll feel there's a lot of difference in your reading ability now. Okay? How to deal with complex words? योगेश, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। हम अगर आपको होता है ऐसे, देखो यार, किसी को पूरी डिक्शनरी याद नहीं हो पाती। नोबडी इज अ कंप्यूटर या नोबडी इज अ जीनियस व्हाटसोएवर फॉर दिस रीजन। सो सारे वर्ड्स किसी को याद नहीं हो पाते, ठीक है। तो क्या करना होता है, कई बार ना रीडिंग हैबिट तो होनी चाहिए आपकी, कंटेक्चुअल उसका मतलब भी समझा करो। कई बार सेंटेंस में उसको ना, हमें कॉम्प्लेक्स वर्ड समझ नहीं आ रहा तो सेंटेंस में देखो कैसे दिया है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, इफ आई रिमेम्बर, क्या एग्जांपल किया था हमने, एमी केबल, याद है? यस योगेश, एमी केबल का मतलब क्या होता है, मे बी रैंडमली याद ना है, लेकिन अगर मैं उसको सेंटेंस में पढ़ता हूँ, जैसे एवरीबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही हैज एमिकेबल नेचर। सो मैं गैस कर सकता हूँ कि यार क्या मतलब है इसका यहाँ पे, अच्छा नेचर। वन पैसेज फॉर इंग्लिश, टू पजल्स फॉर रीजनिंग एवरी डे, वेरी गुड। सो ये तो वो कहावत नहीं है आकांक्षा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वन पैसेज फॉर इंग्लिश, टू पैसेज फॉर रीजनिंग एवरी डे कीप्स द फियर अवे। सही है, यस। तो बेसिकली, हेलो शुभांगी, वेलकम टू द सेशन। तो चलो गाइस, सॉल्व करके देखना, छोटा सा पैसेज है, एंड लेट्स सी कि हमें क्या क्या उसमें अभी ढूंढना है। व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट इज आवर अप्रोच टू वर्क, ठीक है। इट इज अ कॉमन साइट इन आवर कंट्री ऑफ एम्प्लॉइज। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा ये आपके लिए, आपने करना है, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ आपके साथ। इट इज अ कॉमन साइट इन आवर कंट्री ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम and at the same time doing little work. So it is a common sight in our country of employees reporting for duty on time and at the same time doing little work. मतलब काम नहीं करता है. If an assessment is made of the time that they spent in uh, gossiping, drinking tea, eating pan and smoking cigarettes, it will be shocking to know that the time devoted to actual work is negligible. The problem is the standard which the leadership in administration sets for the staff. जो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लीडरशिप है, जैसे वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, वैसा ही सबऑर्डिनेट्स करते हैं। Forget the ministers because they mix politics and administration. What do top bureaucrats do? What do the officials down below do? The administrative setup remains weak mainly because the employees do not set the right example to employers do not set right example to follow, and they are more concerned about being in the good books of bosses than doing work. Acha. The administrative setup remains weak mainly because the employees do not set the right example to follow, and they are more concerned about being in good books of the bosses than doing work. उसने वर्क कल्चर बताया। हेलो जुअल, वेलकम टू द सेशन। तो वर्क कल्चर बताया, इंडिया का वर्क कल्चर कैसा है। लोग देखने को मिलेगा काम पे आते तो हैं टाइम पे, लेकिन काम करते नहीं है। और ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है, लीडरशिप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कैसे एग्जाम्पल सेट करती है, ठीक है। सो बेसिकली लीडरशिप में प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो जैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम है, राइट। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं गाइस।
The employees in our country are quite punctual but not duty conscious, are not punctual but somehow manage to complete their work, are somewhat lazy but good natured, are not very highly qualified. Yes, guys. Question number 1. What should be the answer? Ice Cube late हो गया आज, कोई बात नहीं. Was the session again? First, good evening, Ice Cube. B, C. योगेश देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था. उन्होंने दिया है कि हमारे उसमें क्या जगह क्या बनता है. पहली लाइन में आंसर दिया हुआ है यार. देखो, व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट इज आवर अप्रोच टू वर्क. हमारे अप्रोच टू वर्क गलत है. इट इज अ कॉमन साइट इन आवर कंट्री ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम. के टाइम पे आ तो जाते हैं एंड एट द सेम टाइम डूइंग लिटिल वर्क. आ तो जाते हैं टाइम पे लेकिन काम नहीं करके दिखाते हैं. ठीक है. तो बेसिकली क्या यहाँ पे हुआ? आर क्वाइट पंक्चुअल बट नॉट ड्यूटी कॉन्शियस, आर नॉट पंक्चुअल बट somehow manage to complete their work, are somewhat lazy but good natured, are not very highly qualified. I think the correct answer is they show up on work on time but they are not duty conscious. So the correct answer is A. Yes, guys. Second question. The leadership in administration sets a fine example to the employees, is of a reasonably high standard, is composed of idealists, is of a very poor standard. Very good, Aarti. Very good, Swati. क्या उसने बोला है कि लीडरशिप जो एडमिनिस्ट्रेशन में लीडरशिप है वो बहुत ही पुअर स्टैंडर्ड की है. It does not set good example for the employees. So correct answer is option number D. Very good, Akash. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. द वर्क असेसमेंट मीन्स. ठीक है, जिसने यहाँ पे दिया हुआ है देखो. इफ एन असेसमेंट इज मेड of the time spent in gossiping, drinking tea, eating pan, smoking cigarettes, it will be shocking to know that the time devoted to actual work is negligible. यहाँ assessment की बात क्या कर रहा है? यहाँ assessment word का मतलब क्या है guys? The word work नहीं है. The word assessment means inquiry, report, evaluation या summary. Very good. The word assessment means here evaluation. If an evaluation of is done for the time spent at work and during the time spent for other things would be very high. The correct answer is the assessment word here means evaluation. Question number 4, guys. According to the writer, the administration in India is by and large effective, very strict and firm, affected by red tape, या more or less ineffective. Very good, Mayank. Very good, Vicky. Yes, guys. So, according to the writer, the administration in India is more or less ineffective. Very well done. क्या पूरे पैसेज में क्या कह रहे हैं वो? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम नहीं करते इंडिया में. इट डज नॉट सेट द राइट एग्जाम्पल टू फॉलो. चलो guys, coming to the last question for today, the central idea of the passage could be best expressed by the following. The employee's outlook towards work is justified. The employees must change their outlook towards work. Employees would never change their work culture. And the employer-employee relationship is far from healthy. Very good, Akash. Yes, Mayank, Swati, Akash. D. एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप वो तो बहुत अच्छा है क्योंकि चुगली चलती है. ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है? एम्प्लॉयज मस्ट चेंज द आउटलुक टुवर्ड्स वर्क. उनको समझना पड़ेगा जैसा वो काम करेंगे वैसे उनके बाद में आने वाले एम्प्लॉयज काम करेंगे
चुगली ना करके, अपने एम्प्लॉयर की चापलूसी ना करके उनको काम पे ध्यान देना चाहिए. तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड कीर्तना, वेरी गुड उज्जवल, आरती, कांक्षा, योगेश, वेरी गुड विकी, ग्रेट. Guys, see how easy it becomes if you read the questions first. So guys, comprehension को practice करो, reading habit बनाओ. ठीक है, read one passage every day, you solve questions every day. So that would make your reading ability, your vocabulary and your in general English very good. Guys, इससे बहुत सी हो जाएगी आपकी English, reading ability भी, vocabulary भी, control over the language भी, और नए नए आपको terms, terminology पता लगेगी. So please guys, make it a habit to solve one comprehension every day. So this was just to share with you the tricks for reading comprehension, right? चलो guys, that was the end of the session guys. कैसा लगा आपको session? कितने marks? I think सभी के सारे ठीक हो गए होंगे. So today I only wanted to discuss what could be done in reading comprehension, what could be done differently in reading comprehension. And guys, मैंने सेशन के शुरू में ही बताया था, we have launched a master course for Quants Reasoning English, and you can avail a 30% off on 7,000 rupees. So that would cost you only 4,900 rupees for complete master course. And for separate English course, you can use my coupon code NARVI30, and you can avail it for I think 2,100 rupees. So guys, 4,900 for master course and 2,100 for only English. What could be cheaper than that, guys? Correct? अभी कुछ भी लोग आ जाते हैं यार सेशन में. चलो guys, so that was the end of the session. Guys, कैसा लगा आप सबको ये सेशन? प्लीज डू शेयर विद मी. अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए. Thank you so much. Guys, if you have any queries, you can call us on this number. Guys, कोर्स के बारे में कुछ पूछना है आपने, या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है regarding anything, so you can contact us on this phone number 8146207241, or you can write us an email hello@edutap.co.in. Guys, thank you so much for tuning in, and Akash, I'll try to fix the mic issue, guys. Right? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बैच है, जब सेबी का पेपर 1 की डेट आ जाएगी ना आदित्य, तब हम शुरू करेंगे. अभी नबार्ड का चल रहा है फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का बैच आदित्य, क्योंकि अभी 24 को नबार्ड का पेपर है. जिस का पेपर है, आई विश अगर कोई आप में से किसी का पेपर है तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. और सीबी की जब डेट आ जाएगी ना आदित्य, तब हम वो लॉन्च कर देंगे. तो ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी कर नहीं रहे उसको प्रैक्टिस, अभी फेज 1 की कर रहे हैं बच्चे तैयारी. Thank you so much, Aarti. Thank you, Vicky. Thank you, Ice Cube. Thank you, Akansha. Thank you, Swati. Thank you, Aarti. Thank you, Joel. Guys, and thank you everyone who sees this session. And अगर अच्छा लगे तो guys like please ज़रूर करना, और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो comment छोड़ देना है, बुरा लगा तो dislike भी कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है. तो next class would be on Tuesday. देखिए Tuesday और Friday को होती है English की क्लास. Tuesday शाम को 7 बजे और Friday शाम को 7 बजे, ठीक है. डेट हर वीक होती है देखिए, ठीक है, एवरी वीक ट्यूसडे एंड फ्राइडे. सो अगर आज क्या है, इट इज 19, तो 20, 21, 22, 23, 23 को शायद 22 को होगी. थैंक यू स्वामी. तो आई थिंक दैट वाज इट. अच्छा आज 18th है ना, सॉरी 19th कह रहा हूँ. आज 18th है, तो 19th का सैटरडे, 20th का संडे, 21st का मंडे, हाँ 22nd को होगी, राइट. अरे thank you so much for the kind words, Swati. All right. Chalo guys, thank you so much. Have a great time, and please be safe. Please be, please keep on preparing for your exams, and I'm damn sure you'll be successful in life. Okay. All the best, and I'll see you again on Tuesday, guys. So I'll take your leave for tonight. Thank you so much, and happy learning to all of you. Thank you, Vicky. Thank you so much, yaar.